Okay, guys. So till now we have seen JavaScript, uh, the use of JavaScript on the client side, right? That means we can use JavaScript for the dynamic manipulation of the content at the runtime, plus form validation, right? The validation of the form, right? So JavaScript is a full-fledged language, and it can also be used on the server side, right? Or writing small programs which are standard programs. Was this? For that purpose, you have to see when we run JavaScript within the browser contains the JavaScript engine, right? That means a small container is embedded within the browser itself, right? Which interprets the code along with the HTML and CSS. So Node.js is a lightweight server which is a cross-platform. That means we have Node.js for different platforms, for Windows, for Linux, and for other platforms, Mac operating system, and all those. Uh, it's open source. It's an open source server, and it provides a runtime environment for writing interpreting the backend JavaScript code. Okay. So till now we were talking all about the front end part. Now with the help of Node.js, we can also use JavaScript for the backend part of also, right? End to end communication in that sense. So here's a little note that I have gathered, but I will just go through some of the important lines, and rest you can go on your own. Okay. So Node.js is basically an open source cross-platform backend Java runtime environment that allows developers to run JavaScript code on the server side, right? Uh, then a little about the history when it was created. Then, Node.js provides a set of APIs. What is API? Application programming interfaces, right? That means the classes and the functions, right? That you can just use them in your application, and that helps the developers to build a scalable high performance application, right? You can even make a small web server out of it. And when you so you have to install Node.js separately to make it available, right? And when you install Node.js, there is something called as npm, Node Package Manager, that comes along with it. When you install Node.js, this npm is also installed, right? And it's a because it's a open source, Node.js is a open source maintained by open source community. So npm has a very large software registry, and that as per the data, it says that it has over 1.5 million packages, right? uh, that are built for backend side of JavaScripting use. uh, as the benefits of Node.js is that it's a non-blocking IO model. So any idea what is a non-blocking IO model? No. So a blocking means blocking IO. That means it is talking about the input output, right? So when you try to get something from the form parameter on the server side, or want to dispatch a page, okay, or want to print something on the console, right? So it's non-blocking. That means uh, these actions these actions are, if they are requested by uh, multiple users, or multiple programs as such, or multiple hits, that you can say, if we are talking in the request and response model, then in that case it's not like that. If one request is not served, so all other requests are going to be hold for some time. Okay? It's not like that. That means the this Node.js container maintains the code, and runs the backend code into a multi-threading kind of environment, where each request, or even each request IO, that is for just for the IO operations, that is being treated in a separate lightweight program, which we call as a threading journal, right? So that's not very heavy on the resources, plus it's much more optimized and fast. Okay, in that sense.
look why it says this makes it particularly well suited for building applications that needs to handle a high volume of data in real time, just because it's a non-blocking IO model. Okay. So npm, as I said, it's a node package manager. It's again a command line tool that comes bundled with node.js. So once you install node.js, this npm is also installed. uh, it not only manages package but also maintains the dependencies. What is a dependency? What is a dependency? Dependency. See, if you pick up one package, right, which is already built, that's open source, right, and you want to build your own package on top of it for doing something, some operation which may be the same operation but in a much easier way, right? This happens, right? So in that case, if you want to build such packages which are dependent on other packages, so that is what we call as dependency. One package that you want to use has a dependency of some other underlying package, right? So npm not only just maintains and manages the installation of the packages, right, but it also maintains the dependency. If one package has a dependency over other few packages, then if that package is installed, rest others are automatically taken care of. Okay. So I will give you this note and go through other details of node.js and npm. Most important points are already captured. Let's see how to install them. So while I was installing on my system, I captured the screenshots so that you can reproduce the same thing on your machines. So to install node.js and npm, right, what you do, you just google node.js download. Node.js space download, just search on the google. In the first few links, one, two, or three links, you will see nodejs.org, right? This link you will see with a download. Okay? You have to go on this particular link, then choose the right installer. Right installers means you will see installers for different operating systems like Windows, for Mac OS, and so on. So, likewise, I have choose 64-bit Windows installer. And once you have downloaded this installer, then that will be a exe file, and all you have to do is to run the installer and do as it is what it says, right? So the installation will be complete, and then while installing it may ask about the Windows security permissions, all that. So you have to just give the security permissions, say yes if it asks for it. Okay, so once you are done, then just to verify that everything is open, everything is done, installed, open a command prompt and type node hyphen double hyphen version. Okay, you will see the version of Node.js. If you see something like this coming, like for example, my version is v18.14.2, right? If something like this is coming, that means Node.js is installed. Similarly, to figure out that the package npm is also installed properly or not, just check npm RE, npm hyphen double hyphen version, right? So again, when you try this, you will see the version of the npm being displayed, right? So once these two steps are over, I'm pretty much sure and comfortable that my both Node.js and npm are installed properly. Now, once these you know this thing is done, right? I can write a program in a file with .js extension, right? JS for JavaScript, and I can just run the program. Okay. If you can see, it's a very simple program. Like for example, I have declared a variable a with value is equal to 10. Variable b, say for example, let me say its value is 5 initially. Okay, so I want to perform a divide operation, so I say a divided by b, right? So division operator is being used, and the store result is stored in the div variable.
and then simply I print the diff variable. So I will get the answer as 2 as of now for these values of a and b, and then I do some kind of conditional checks. For loops is also available, right? Everything that a language support is basically available because it's a full-fledged language, right? So if a is double equal to 0, that means if I've given the value a is equal to 0, then I should print console.log as a string that a is equal to 0, and the result will also be 0 in fact. Uh, if b is 0, then we will see what this line number 5 prints, but we are getting pre-defensive, and we try to print console.log divided by 0 error. ठीक है, आप देखेंगे कई सारी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आते हैं, राइट? ठीक है, familiar है, right? So you will see many languages giving the exception divided by 0 error when you try to divide by a number by 0, right? So that basically comes with an object oriented programming languages. Even before the object oriented programming language, like C programming, how do we use to figure out if there is a problem in the code and try to deal with it? In an object oriented programming, you are familiar with try and catch blocks, right? You put the code which may be problematic in the try block, and then you write a subsequent catch block after it, so that if that particular problem occurs, that the particular nature of the problem occurs, then you get into that catch block and handle it, do something for it, right? Handling means doing something for it. Similarly, for languages like C, which are procedural language and do not have all these object-oriented methods for handling the runtime exceptions. In that case, this is called as a defensive kind of handling, right? Defensive means you already write code which may have the problem, and the operation will be performed not here but rather within this block, like this. Sorry. Okay. So you will say if b is not equal to 0, not equal to 0, then do this. Else you will write, I'm not writing the full code just for the sake of understanding. Else you will do the divide operation. Okay. So this is a kind of a defensive handling. So just for the demonstration purpose, I have written this code. Otherwise, okay. So once the installation of Node.js and npm package manager is done, then all you can do is you can just go to the run here and select the option run without debugging, right? And the JavaScript code will run. Okay. But you can see this is a small icon. This is also a run button. And earlier, when you just install the Node.js and npm package manager, you won't find this icon coming over here. Then in that case, if you want to run, as I told you, that you will have to go with this option, run without debugging. But this is more comfortable that you get a run button right over here. So for that, I have just installed a very small, um, uh, you know, extension, and that extension is called as Code Runner. Okay. So all you have to do is you have to go to here, this place extension, and then once you click, and you have to search for the extension Code Runner, and it will come, it will show up, and then you install it. That's it. Okay. Once you get that done, then you will see that this button start coming over here. So let me just run this code and let's see what is the result that we are getting. Eh? Vanity what are the okay. Is equal to a by b. ठीक है. Hmm? अच्छा, देखिए, आपको पहले ही मैंने बताया था कि एक वेरिएबल 4 तरह से डिक्लेयर करते हैं। 3 तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक तरीके से कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। So where a is one way, let b is another way. Although there is a difference between these two, and we will see the difference right today. And then you do not put any keyword, just like a Python. ठीक है? So that is again a variable.
declaration. ठीक है, so both ways work. ठीक है, but if still if you want the consistency to be maintained, let's say I want to use where everywhere, I will use the where, otherwise that's perfectly all right. ठीक है, ठीक है, so all these three ways were okay. And if we were to declare a constant, then we will use the constant keyword, constant c for example, right? And like this is equal to 7 for example. Fine, ठीक है. So let me run it. You see what is the output? A by B, 10 by 5. First 2 is coming over here, right? Then from where this second 2 is coming, let's see. If A is equal to 0, acha. If A is equal to 0, no, A is not equal to 0, so it will not get into this if block. Else if B is equal to 0, no, B is also not equal to 0, it will not come into this else if block also. Else, again we are printing log div, so the same thing 2 is coming over here again, right? Fine. Let's say A is equal to 0, just to check and clear the console. And in that case, uh, the division result is also 0 and we are getting the output as console.log a equal to 0 as a string. Okay. Let's say a is 10 and b is equal to 0. In that case, from line number 5, we are getting the output as infinity. Okay. If you divide any number by 0, the result is infinity. And then from this condition check, else if line number 11, if b is equal to 0, this is true, and then we are printing this divide by 0 error. ठीक है, fine. यहाँ तक क्लियर है भाई? Okay. So let's see the difference between a variable declared by var keyword eh, versus let keyword versus declared without a keyword. हाँ जी, ठीक है. Where let and I am leaving it empty. That means I am not putting anything before the declaration of the variable. ठीक है. तो मैं इन दोनों का लिखता हूँ. इसका आप खुद अभी कोड में जब एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तब बताते जाएंगे, हम यहाँ फिल करेंगे. ठीक है. So first difference, there are three key differences in fact. First difference is about the scope. ठीक है. So the scope of where the variable declared with the where keyword is function scope. ठीक है. Fine. For let it's block level scope, right? And you are going to tell me if I do not use the keyword, then what is the scope? ठीक है. With the experiment. Then the next difference is scope हो गया. Then और क्या था भाई? हाँ, declaration. Re declaration. अजी
in case of a variable declared by where keyword is allowed. ठीक है. Redeclaration in the case of let is not allowed, and you are going to tell me about declaring variable without keyword. ठीक है. Then third is something called as hosting. I will tell you about what it is allowed for a variable declared with the where keyword. ठीक है. Hosting is not allowed for let. Fine. In fact, let is something which was which came into picture in somewhere around 2015. Where is much earlier. Uh, and the reason why let came into picture is because where and the way variable without keyword, they are quite confusing and bug prone. That means the chances that you will create the bugs. So let came with a strict mandate, and that is more encouraged to be used. Okay. So let's try to understand what is the function scope. Okay. I have created a demo for it, a small demo program for it. Let's see. Just look at this code. Function is a keyword to declare a function in JavaScript. The file name is var underscore scope demo.js. Okay. The name of function is my function. It's an identifier, right? What is an identifier? It's an interview question. What's the identifier? Yes, tell me. Name given to class, variable, or function, whatever. Okay. That identifies something, right? Whether it be a class, it's a variable, or it's a function, right? In general, we call it's a identifier. Okay. And here you can see the call to this function, right? Here it's a call to the function, right? Then in this function, what we have done is we have used all the three syntax for declaring a variable. So we have used the var keyword, and the variable name is xvar function. Its value is given as 1. Let, we have used the let keyword. W let function is the name of the variable, and its value is 2. And similarly, we have not used any keyword, and then we have given it the name u is equal to 3. So 1, 2, and 3 for var, let, and uh, a variable declared without a keyword, right? So this is function. The function body starts from here and it ends here, right? And you can see this if block starts here and ends here, right? We are talking about function and the block scope, right? So we have just seen that where is function scope, whereas let is a block level scope. Okay. That means if we have declared a variable with the var keyword, that could be accessed within the function anywhere, right? Even inside a block or inside the function declaration, but within the function declaration body itself, right? Whereas if we have declared a variable which is block level declaration, that means within a block, we cannot use outside the block. Okay? We cannot use outside the block. Okay? तो फंक्शन लेवल वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर किए हमने, ये तीन करे हैं, एक्स वायर फंक्शन, डब्ल्यू लेट फंक्शन एंड यू. All three are the three I have given function. I should have given the name as there, right? Variable. Just leave it. Okay, I might have given the name function as to indicate that it's a scope is function. Okay.
ठीक है, मतलब जो वेरिएबल फंक्शन से शुरू हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम यू, उनका मतलब क्या है कि उनका जो स्कोप डिक्लेयर्ड है वो फंक्शन का स्कोप है। ठीक है, पूरे फंक्शन में कहीं भी कॉल हो सकते हैं, वो किसी भी ब्लॉक के अंदर कॉल हो सकते हैं, राइट। वेयर एज जिनका ब्लॉक है, इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ब्लॉक में ही कॉल हो पाएंगे। ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा, तीन ब्लॉक लेवल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इफ ट्रू, इसका मतलब दिस कंडीशन विल ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू एंड द कोड इज गोइंग टू एंटर विद इन इट। ठीक है, चाहे ये ब्लॉक इफ ब्लॉक हो, फॉर ब्लॉक हो, वाइल ब्लॉक हो, कोई ब्लॉक हो, या सिंपली कोई कोई कंडीशन हमने नहीं लगाया, सिंपली अगर हम ऐसे भी कर दें देन ऑल्सो इट्स अ वैलिड ब्लॉक। ठीक है, तब भी स्कोप के रूल्स अप्लाई होंगे। फाइन। Okay, now we are printing the x, w and u variables which are at the function scope. ठीक है, and then we are printing the y, z and v variables which are within this block, that means block level scoped variables. And let's see what is the output. For a while, let's put these things inside the comment. 1 2 3 4 5 6, every statement is able to print, right? 1 2 3 comes from the function level scope, and then in fact those variables are printed within the block itself, but because they have a function level larger scope, so they are printed within the block also, and whatever is within defined within the block, that will also be printed. Okay, that's fine as per the expectation. Now let's uncomment this. Again we have printed the same set of variables, the function level variables and the block level variables, and let's see what is the output that we are getting now. Or rather we should put these in comments so that it's much easier to understand. क्या हुआ? कोड सेलेक्ट करके रन कर दिया क्या मैंने? हाँ, अब देखिए क्या प्रिंट कर रहा है। 1 2 3 जो फंक्शन लेवल के तीनों प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद 4 वैर से शुरू हो रहा है, ये वैर वेरिएबल है, तो चाहे वो ब्लॉक में डिक्लेयर है तो भी हम फंक्शन में उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये तो एक्सेस हो जा रहा है, 4 प्रिंट हो जा रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस विद z let block, that is a variable declared with let and in a block scope we get a error for it। ठीक है, और एरर क्या कह रहा है आपसे? that block is not defined because it is meant for the block itself, so we are trying to access them outside the block, it's not in the function scope, let is not allowed for the function scope। अच्छा, अब ये पहले एरर आ रही है, इसको हम रिजॉल्व कर दे तो एक डिफरेंस समझ में आ गया। वैर से जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो फंक्शन में कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट से कर रहे हैं तो जिस ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं सिर्फ उसी में एक्सेस होगी, राइट। ये क्लियर हो गया, सिंपल। What about this variable v, which is not defined with a variable? I mean, without a with a keyword. It's defined without a keyword. So let's see what happens. इसको मैंने कमेंट कर दिया, इससे अब एरर नहीं आएगी, राइट। अब एरर आनी होगी तो इससे आएगी, राइट। आउटपुट क्या आया? 1 2 3 4 5 कमेंटेड है तो 5 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें एरर आ रही थी। 6 प्रिंट हो गया। So you will see where and a variable declared without a where keyword or a let keyword, they both seem to work, in an identical way. There are differences still, but they seem to work in an identical way, right? So what should I fill here for a variable which is declared without a keyword? What is the scope? Function or block? Function, right? क्योंकि ब्लॉक से बाहर आके भी वो प्रिंट कर पा रहा है, राइट। सो
function level scope, right? Now let's see how about redeclaration. ठीक है? So for where a variable declared with the where keyword, redeclaration is allowed. For let, redeclaration is not allowed. And you will tell me whether redeclaration is allowed for a variable which is not defined by a using a keyword. ठीक है? So for where I am claiming that it's allowed. Let's go to the second demo. You can just see right over here. Where से x को declare करा value 1, let से y को declare करा 2, z से without any keyword declare करा value is equal to 3. ठीक है? Right over here you can see that if I try to repeat these three declarations, when I say declaration I am not saying that it's an assignment. अगर मैं where को यहाँ पे ऐसे करता x is equal to 4, ठीक है, तो वो क्या होता, असाइनमेंट होता. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रीडिक्लेयर उसको कर रहा हूँ, प्रॉपरली कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, दोबारा से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ. तो आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लेट के केस में ये आईडी मुझे एरर शो कर रहा है, ये आईडी शो कर रहा है, हालांकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट आईडी इज हेल्पिंग मी. विजुअल स्टूडियो शोइंग मी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर. ठीक है, अगर मैं इसको लेट यहाँ से हटा देता, सिंपली y इज इक्वल टू 5 करता, तो एरर चली गई. क्यों? क्योंकि असाइनमेंट हो गया, रीडिक्लेरेशन नहीं हो गया. ठीक है, यहाँ पे मैं रीडिक्लेरेशन कर रहा हूँ, राइट. तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ लेट के केस में रीडिक्लेरेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है. अदरवाइज वेर के केस में या विदाउट एनी कीवर्ड अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को, तो उस केस में ये प्रॉपरली काम कर रहा है. ठीक है, सो अगेन what should I fill over here? Redeclaration is allowed, very much similar to the where, right? ठीक है, तो अगर मैं एक बार इसको चला के देखना चाहूँ, तो जस्ट लेट मी क्लियर द आउटपुट. आप देखेंगे तो जो सेम एरर जो यहाँ पे आईडी आपको शो कर रहा है, ये आपको रन करते वक्त नोड जीएस भी आपको सेम एरर दे रहा है. कोड किस में रन हो रहा है? रन टाइम इन्वायरमेंट में. रन टाइम इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? नोड जीएस कर रहा है, जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, राइट. तो क्या बता रहा है? आइडेंटिफायर वाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये लेट्स के थ्रू हुआ है, या दिखा रहा है, राइट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? फाइन. लेट्स मूव टू द होस्टिंग. होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है. सी, वेरिएबल एक्स वायर टाइप से डिक्लेयर कर रखा है, वाई को लेट से कर रखा है, जेड को विदाउट एनी कीवर्ड कर रखा है, एंड देन फॉर द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ कांस्टेंट आल्सो आई हैव डिक्लेयर्ड अ कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो पहले कांस्टेंट ही देख लेते हैं. अगर आपने किसी वेरिएबल किसी किसी फील्ड को, वेरिएबल नहीं कहूंगा मैं, फील्ड कहूंगा. ठीक है, फील्ड कुड बी अ वेरिएबल, इट कुड बी अ कांस्टेंट, राइट. किसी फील्ड को कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है, एंड देन यू हैव असाइंड अ वैल्यू टू इट. So once if you have assigned a value to it, you are not allowed to assign or reassign a value anywhere in the code again. आईडी अभी एरर तो नहीं शो कर रहा है, राइट, लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपको एरर दिख जाएगी. क्या बोल रहा है? c इज इक्वल टू 5 पे ही एरर दिखा रहा है. और क्या बोल रहा है? इट्स द एरर टाइप ऑफ द एरर इज व्हाट? यू आर ट्राइंग टू असाइन समथिंग टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, वैल्यू टू अ कांस्टेंट वेरिएबल. ठीक है, सो दिस इज not permissible. Once you have created a constant, that means it's a constant. Like for example pi, अगर आप पाई बना रहे हैं तो पाई का मतलब क्या है? 3.14 समथिंग जो वैल्यू होती है. तो फिर आपके पूरी लाइफ टाइम में एक चीज स्टैंडर्ड फिक्स हो गई, कहीं भी आपको उसको रीअसाइन करने की वैल्यू जरूरत नहीं है. कोई अगर करना चाहता है तो इसका मतलब जितनी भी जगह उस पाई की वैल्यू को आपने यूज कर रखा है, अगर असाइन करने देते हैं तो सारे कैलकुलेशन करप्ट हो जाते हैं, राइट. तो ऐसी चीज को जब आपको बनाना हो तो क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, राइट. सिंपल. नाउ I am printing here all the four kind of fields, three being variable and one being the constant. ठीक है, x, y, z and c. Let's see what is the output.
सेव नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसलिए पुराना आउटपुट फिर से दिखा रहा है। जस्ट अ सेकंड, सारे प्रिंट कर दिए इसने 1 2 3 4, राइट। अब ऊपर वाला कोड मैं अनकमेंट करता हूँ। इसे बोलते हैं हॉस्टिंग। हॉस्टिंग मतलब क्या हुआ कि आपने वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन नीचे कर रखा है और आप उनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पहले, ठीक है। कई लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं इसको, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं अभी हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है। एज पर द this chart, for where we are expecting hashing to be allowed, that means if we try to use that variable before even initializing it or declaring it, even before declaring it, we should get some output, right? For let, it should not be allowed, and you will tell me what it is for the other type declaration where we do not use a keyword, ठीक है। देखिए क्या हमें मिला एरर। x के लिए इसने प्रिंट करा अनडिफाइंड, क्योंकि इस जगह पे x आपका डिफाइंड नहीं है, x बाद में डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। अगले स्टेप पे आए तो y के लिए इसने रोक दिया हमें। y के लिए क्या बोला, क्योंकि ये लेट से डिक्लेयर हो रहा था, इसने कहा कैन नॉट एसेस y बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी हॉस्टिंग लेट के लिए परमिशिबल नहीं है, राइट, फाइन। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं बाकी के लिए क्या है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। कोड को आगे बढ़ने देते हैं और फिर देखते हैं बाकी सब z और c के लिए क्या हो रहा है। z के लिए भी क्या है, z इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स अगर आप कोई वेरिएबल को बिना किसी कीवर्ड के डिफाइन कर रहे हैं तो वो भी किस तरह से काम कर रहा है, आपकी बार वेयर की तरह काम नहीं कर रहा है, आपकी बार किस तरह काम कर रहा है, लेट की तरह काम कर रहा है, हॉस्टिंग अवेलेबल नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम समझ गए, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। एंड देन व्हाट अबाउट कांस्टेंट, लेट्स सी अबाउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट इज आल्सो कैन नॉट बी accessed बिफोर द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ओनली वेयर इज समथिंग व्हिच इज फॉर व्हिच हॉस्टिंग इज परमिशिबल, आप उसको पहले यूज कर सकते हैं इवन बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लियर है। अब इसको, इन सारी चीजों को जो हमने डिस्कस किया है, इन सबको दिमाग में रखते हुए देखिए कि वेयर क्यों एरर प्रोन है। आप वेयर डिक्लेयर करेंगे किसी स्कोप में, असेस करेंगे किसी और स्कोप में, अलाउड है इसमें, राइट। वेयर को आपने एक जगह डिक्लेयर करा गलती से, फिर उसी नाम से कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अक्सर ऐसा होता है, तो हमें दिखता है कि भाई एरर दिखती है कि भाई डुप्लीकेट वेरिएबल, ठीक है, आप रुक जाते हैं वहां पर। वेयर में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, एरर होगी, वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, इनफैक्ट वैल्यू रीडिक्लेरेशन के साथ चेंज भी हो जाती है। हमने जो प्रिंट कराया था उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो वैल्यू रीडिक्लेरेशन के साथ चेंज हो जा रही थी वेयर की, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपने कोई वेरिएबल पहले यूज कर रखा है, उसको डिक्लेयर नहीं करा है और रिजल्ट उसका अनडिफाइंड आ रहा है, जब आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जावास्क्रिप्ट को यूज करके या उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके अगेंस्ट चेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप तो किसी वैल्यू से चेक कर रहे होंगे और वो अनडिफाइंड दे रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाई this where was something which was a means for JavaScript, and then let was introduced. So let is one of the safest way to declare a variable, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्लॉक जिस ब्लॉक में डिफाइन है उसी ब्लॉक में आपको एक्सेस करना है, उसके ऊपर नीचे की टेंशन नहीं है, हॉस्टिंग की टेंशन नहीं है कि पहले से आप उसको यूज कर सकते हैं, रीडिक्लेरेशन आप उसको नहीं कर सकते जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। गाइस क्लियर है, फाइन। तो इसमें बताइए इसके लिए क्या बने, हॉस्टिंग नॉट अलाउड, फाइन। कॉन्स्टेंट आपने देख लिया है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। ओके गाइस, तो अब तक हम जितने भी कोड देख रहे थे, ये हम ऐसे कोड देख रहे थे जिसको स्टैंडर्ड में हम रन कर रहे थे या सर्वर साइड के लिए अज्यूम करके मिमिक करके रन कर रहे थे, राइट। अब एक कोड और देखते हैं। देखिए ये एक एचटीएमएल फाइल बना रखी है मैंने, build.html, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन है ये क्या बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट को मैंने
इनलाइन यूज कर रखा है, और और क्या क्या होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, राइट। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जो टैग आप यूज कर रहे हैं उसी में आपने यूज कर रखा है, राइट, उसको हम बोलते हैं इनलाइन। पूरा आपने जावास्क्रिप्ट में कोड कर रखा है, जस्ट लाइक सीएसएस। तो सीएसएस में भी आप इनलाइन आप जानते हैं क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। सेम कंसेप्ट इज हियर आल्सो फॉर जावास्क्रिप्ट, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है या इनलाइन है, क्या है, ये जो हम यूज कर रहे हैं लाइन, इसकी वजह से ये इन जावास्क्रिप्ट को हम इनलाइन यूज कर रहे हैं, इंटरनल यूज कर रहे हैं या एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं। इंटरनल तब होता जब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हेड में या बॉडी में कोड लिख रहे होते, राइट, तब इंटरनल होता, राइट। जैसे सीएसएस को इंटरनल करना है तो क्या टैग यूज करना होता है, स्टाइल टैग यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन सीएसएस को भी एक्सटर्नल हम फाइल में डाल करके डॉट सीएसएस फाइल के साथ हम यहाँ पे दे सकते हैं ना। कैसे देते थे आप, लिंक ऐसे देते थे ना, राइट, ऐसे ही देते थे ना, राइट। अब इस एचटीएमएल फाइल में क्या हो रहा है, देखिए h3 हेडर 3 में डिक्लेयर कर रखा है, फाइन। इस हेडर ट्री का कोई कुछ हेडर 3 का कुछ कंटेंट है क्या, कुछ कंटेंट नहीं है, यानी बस मैंने टैग डिक्लेयर कर रखा है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर, ठीक है। अगर मैंने इस तरह लिखा होता वेलकम, तो वेलकम हेड 3 के साइज का प्रिंट होता, राइट, एचटीएमएल पेज पर। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको छोड़ रखा है एज अ प्लेस होल्डर फॉर प्रिंटिंग समथिंग, ठीक है। इसकी आईडी मैंने जरूर बना रखी है। आईडी किससे यूज होती है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में के पेज में इंटरनली किसी टैग को, किसी पर्टिकुलर टैग को डिफर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए या उसका हैंडल लेने के लिए, राइट, फाइन। अब बटन पे मैंने क्या ट्रिगर लगाया है या इवेंट लगाया है, ऑन क्लिक, यानी एक बटन बना रखा है जिसका लेबल क्या होगा, गेट बिल, और उसके क्लिक पर कैलकुलेट बिल फंक्शन कॉल होगा। अब ये कैलकुलेट बिल फंक्शन कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स जो एक ही हमारे पास चीज बची है, बिल्ड कैल्क डॉट जेएस, एक ही फाइल है, उसी फाइल के अंदर ये फंक्शन डिक्लेयर होना चाहिए, राइट। So basically, this is a small page which basically there is a button that appears which has got a label get bill. When you click the get bill, then क्या होगा, एक आपके पास एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए जो पूछेगा आपसे कि भाई कितने का आपने खाना खाया है, फूड बिल कितनी हुई है आपकी। आप फूड बिल इंटर करेंगे तब क्या करेगा, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके सर्टेन रेट से अप्लाई करेगा, फिर आपको टोटल बिल प्रिंट करेगा। और टोटल बिल कहाँ प्रिंट करेगा, इस जगह, यानी H3 के साइज से प्रिंट करेगा, ठीक है, जो अभी एम्प्टी है। ये पर्पस है हमारा, ठीक है। अब जाके देखते हैं कि इस फाइल में क्या है। कैलकुलेट बिल फंक्शन इसी के अंदर होना चाहिए, राइट। कंट्रोल दबाया और इस पे हॉवर करके हम आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये हमको बिल कैल्क डॉट जेएस पे ले जा रहा है, ठीक है। अब इसको एचटीएमएल के साथ हमने इंटीग्रेट कर रखा है। क्या कह रहा है, वेयर जीएसटी रेट इज इक्वल टू 18.18, 18%, ठीक है, 0.18, ठीक है। फंक्शन कैल्क बिल जो कॉल होगा आपका, जीएसटी रेट ऊपर फंक्शन कॉल होने से पहले हम डिक्लेयर कर रखा है, चाहे तो फंक्शन लोकल वेरिएबल बना सकते थे इसको हम, ठीक है, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको कट करके फंक्शन के अंदर डाल दें, पेस्ट कर दें। फिर क्या करें, फूड बिल कर का एक वेरिएबल बनाया हमने, और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या करता है, एचटीएमएल में एक आपको टेक्स्ट बॉक्स प्रॉम्प्ट होकर के आएगा, उसमें जो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं वो मैसेज प्रिंट होगा, और साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आप इंटर कर सकते हैं डाटा इनपुट लेने के लिए, राइट, ठीक है ना भाई। सो डिबगिंग करते वक्त प्रॉम्प्ट हमने देखा था, डिबगिंग में इनफैक्ट आप अलर्ट भी यूज कर सकते थे, हमने प्रॉम्प्ट ही देखा था ताकि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाए उससे। तो प्लीज इंटर टोटल फूड बिल, ये मैसेज प्रिंट होकर के आएगा, और एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स इनपुट बॉक्स बन के आएगा जिसमें हम फूड बिल से फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपीज इंटर कर दी, ठीक है, 100 रुपए की बिल हुई हमारी खाने की। अब क्या मैसेज देगा, अलर्ट, यानी स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट बन के आएगा, एक अलर्ट मैसेज बन के आएगा, बॉक्स बन के आएगा जिसमें लिखा होगा योर इनपुट अमाउंट इज, एंड देन दिस इज द नोटेशन दैट यू यूज, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल देंगे और डॉलर इज अ प्लेस होल्डर, कि इस मैसेज में इस जगह आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, और प्रिंट जो करेंगे वो दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल इज फूड बिल, जिसमें आपने अभी 100 रुपए इंटर करे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको दोबारा से रीअफर्म कर रहा है कि अच्छा ठीक है,
आपने इनपुट किया था अभी 100 रुपए, ठीक है, गैस क्लियर है ना। जैसे आप कुछ इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से, देन यू जस्ट प्रिंट इट आउट, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अब ये बताइए जो आपने इनपुट लिया है वो तो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट हुआ है, राइट। तो वो जो आएगा, अगर मैंने 100 रुपीज इंटर कराया है तो 100 रुपीज न्यूमरिक नहीं आएगा, 100 एज टेक्स्ट आएगा, राइट। तो उसमें कोई कंपटीशन हो सकता है क्या? टेक्स्ट पे तो कंपटीशन नहीं हो सकता है, न्यूमरिक कंपटीशन नहीं हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले हमें न्यूमरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So you have got method like parse int and parse float. You can see parse int, parse float. अगर आप इंटीजर वैल्यू में उस 100 टेक्स्ट से पास करके करके उसको इंटीजर 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पार्स इंट यूज करेंगे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ चूंकि एक बिल की बात है तो हो सकता है पैसे में भी हो, तो फ्लोट में एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ पार्स फ्लोट, ठीक है। तो 100.00 वैल्यू पार्स होकर के फूड बिल के अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब तक फूड बिल का कोई नेचर नहीं था, इससे पहले जो फूड बिल का नेचर था वो क्या था, स्ट्रिंग था, टेक्स्ट था, राइट। अब क्या हुआ, उसका चेंज हो गया, नेचर नेचर क्या चेंज हो गया, अब फ्लोट हो गया। ये रन टाइम पे हो रहा है क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट। नॉन इंटरप्रेटेड मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज जो कि नॉर्मली टाइप चेक लैंग्वेज होती है, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर किसी वेरिएबल को आपने कैर डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, तो उसमें एक लंबी सी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं क्या, या इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है उसमें फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते हैं, जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट न करें। कास्ट का मतलब उसको आप बताएं कि भाई ठीक है हम फ्लोट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम इसको इंटीजर की तरफ कन्वर्ट करो, और अगर कुछ वैल्यूज उसमें लॉस्ट हो जाती हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट करना, एक्सप्लिसिट कास्ट करना। मतलब बोलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो तो चूक रहा है इसकी वजह से, बट कुछ समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कास्टिंग की जरूरत तो पड़ी नहीं, ठीक है, उसने कन्वर्ट कर दिया और नेचर आपके वेरिएबल का चेंज हो गया फ्लोट टाइप में, फाइन। अब फूड बिल हमारा 100 रुपीज आया था, जीएसटी रेट क्या था 0.18, इसे मल्टीप्लाई किया तो जीएसटी कितना आ गया हमारे पास, 18 रुपीज आ जाएगा। तो जीएसटी कितना कैलकुलेट हुआ, 18 रुपीज ऑन टॉप ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। तो टोटल बिल कितने हो गया, एक्चुअल फूड बिल 100 रुपीज प्लस जीएसटी 18 रुपीज, 18 रुपीज, ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो एज यूजुअल हम करते थे, डॉक्यूमेंट जो रूट नोड है आपका डॉम का, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें हम आईडी से एलिमेंट को फेच कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट, रिजल्ट विच इज h3 टाइप एज इन द HTML, और उसके इनर HTML, ठीक है, उसको हम क्या दे रहे हैं वैल्यू, टोटल बिल इज इक्वल टू वेरिएबल टोटल बिल उसमें ऐड हो जाए, यानी ये स्ट्रिंग प्रिंट हो साथ में टोटल बिल की जो वैल्यू हो वो भी इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाए, तो क्या पूरा मैसेज क्या होगा, टोटल बिल इज इक्वल टू 1118, राइट, ये प्रिंट होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट। सो लेट मी रन दिस HTML फाइल। देखिए गेट बिल करके आ रहा है बटन, राइट, हमने इसको क्लिक करा, प्लीज इंटर टोटल फूड बिल, सेम वैल्यू हम देते हैं ताकि आप वेरीफाई कर लें, डिफरेंट वैल्यू से भी कर सकते हैं आप, फिर 200 भी दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक, ठीक है। ओके, योर इनपुट अमाउंट इज ₹100, ये किससे आ रहा है, अलर्ट से आ रहा है, राइट। पहले जो आया था वो किससे आया था, प्रॉम्प्ट से आया था, राइट। टोटल फूड बिल इज इक्वल टू 1118, ये किस जगह पे आ रहा है, जिस जगह पे H3 था, ठीक है, H3 तक, क्लियर है, ये और क्लियर हो गया, ओके। नाउ दिस कोड आई हैव रिटन जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, के मतलब एक कंप्लीशन के लिए, जैसे आप कुछ अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब अक्सर लैंग्वेज में जैसे आप पूछेंगे कि भाई हम कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं, राइट, फाइन। आउटपुट तो हम देख ही रहे हैं, कंसोल पे प्रिंट हो रहा है लॉग, कंसोल डॉट लॉग से, फाइन। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन हम आउटपुट करने के लिए यूज कर रहे हैं कंसोल पे, राइट। अगर हम कीबोर्ड से इनपुट करना चाहें, अभी तो हमने देखा इनपुट हम ले रहे थे प्रॉम्प्ट यूज करके जो कि HTML पेज के ऊपर हो रहा था,
अगर हम डायरेक्टली कंसोल से ही अगर इनपुट लेना चाहें तो क्या करें, ठीक है। तो ये उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। आ जाइए भाई, कैसे रोक सकता हूँ, चलिए आ जाइए, आपकी क्लास ऐसे भी आज, ठीक है ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट सिंक नाम का एक पैकेज होता है, ठीक है। एनपीएम क्या करता है, पैकेज मैनेजर है जो सारे पैकेजेस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट सिंक नाम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, फाइन। उसके लिए कमांड क्या है, npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट सिंक। इसको आप उठा के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उसमें भी टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो टर्मिनल दिख रहा है इसमें भी आप इसको टाइप करें और npm npm इज द नोड पैकेट मैनेजर, इसको यूज कर रहे हैं आप किस पर्पज के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। क्या चीज इंस्टॉल के लिए, पैकेज नेम प्रॉम्प्ट सिंक। जब आप ऐसा करेंगे तो ये कुछ इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। प्रॉम्प्ट सिंक हमारा इंस्टॉल हो गया, इनफैक्ट मेरा तो अपडेट हुआ है क्योंकि पहले से इंस्टॉल था, ठीक है गैस, क्लियर है। अब इसको हम यूज करके हम कंसोल से इनपुट भी ले सकते हैं। तो ये पहली लाइन आपको लिखना पड़ेगा, रिक्वायर प्रॉम्प्ट सिंक, मतलब किसी भी पैकेज को जब आप यूज करते हैं एनपीएम के, तो जनरली आप रिक्वायर लिखते हैं, इस कोड के लिए ये पैकेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, यानी इस फाइल में ये चीज रिक्वायर्ड है। तो समझ लीजिए एक तरह से जैसे इंक्लूड होता था ना, उस तरह से वो चीज आ गई, उसका रेफरेंस आ गया बेसिकली। एंड देन एक कांस्टेंट हमने यूज कर लिया प्रॉम्प्ट, और दिस प्रॉम्प्ट विल बी यूज्ड टू गेट द इनपुट, ठीक है। इसको वेर भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको चेंज नहीं करना है पूरे थ्रू आउट द फाइल में, इसी को यूज करूंगा, एक चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया, दैट मेक मोर सेंस। कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल आपका क्लियर हो जाए, जो कुछ पहले कुछ है वो हट जाए उससे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, प्रॉम्प्ट, यानी ये मैसेज प्रिंट करें, व्हाट इज योर नेम, एंड नॉट ओनली जस्ट प्रिंट। प्रॉम्प्ट फंक्शन जो था उसका काम क्या था, जो एचटीएमएल प्रॉम्प्ट करता था, साथ में इनपुट भी लेता था, राइट। तो ये भी आपको प्रॉम्प्ट करके मैसेज प्रिंट करने के साथ इनपुट भी लेगा कंसोल से, और जो भी इनपुट लेगा उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स पे, वेरिएबल पे डाल देगा, जिसको हमने लेट से डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। मैंने इंटर करा व्हाट इज योर नेम, मैंने अपना नाम इंटर कर दिया, तो वो नाम किस में आया, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में आया, राइट। फिर उसके बाद हम उसी को असर्ट कर रहे हैं, यानी प्रिंट कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, 2 बार हो गया है, ये नहीं काम करेगा, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ओके, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे लॉग कर रहे हैं हम, ओके योर नेम इज प्लस रिस्पॉन्स में जो कुछ आया है वो इसमें ऐड होकर के पूरी एक स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर देगा, राइट, फाइन गाइस, इज इट ओके। Then we are trying to do certain IO operation by reading some numeric value from the keyboard. सेशन खत्म हो गया बेटा, अभी तक लेट आने की इजाजत नहीं गई है, ट्रैफिक तो होता है। आगे क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट अंडरस्कोर नम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लगाया, इंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैसेज प्रिंट होगा और एक नंबर इंटर करने के लिए वेट करेगा, एक नंबर इंटर करेंगे, वो नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नम में जाएगा, राइट। सेकंड अंडरस्कोर नम में क्या होगा, अगेन इंटर द सेकंड नंबर प्रिंट होगा, और सेकंड नंबर जो हम इंटर करेंगे वो उसके अंदर जाएगा, राइट। देन सम इज इक्वल टू फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम, सम टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। कंसोल डॉट लॉग, द फर्स्ट नंबर इज प्लस फर्स्ट नंबर वेरिएबल डाला तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जुड़ जाएगी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने 10 डाला है, तो मैसेज बनेगा द फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकंड नंबर इज से 5 डाला है, तो सेकंड नंबर इज 5 एंड देयर सम शुड बी व्हाट 15, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। तो लेट्स ट्राई दिस, कैसे रन करेंगे, इसको टर्मिनल पे भी रन कर सकते हैं आप, और इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों पे जगह करके देख लीजिए, कि मैं एक जगह आपको बता देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे ट्राई कर लेते हैं हम। लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो फाइल बनाई है किस नाम से बनाई है मैंने, इनपुट अंडरस्कोर कंसोल, स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल डेमो डॉट जेएस, राइट, इस नाम से बनाई है, फाइन। तो ये फाइल जहां है उस जगह जाना पड़ेगा इसको रन करने के लिए, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे हैं। अगर टर्मिनल से कर रहे हैं तो आप आईडी के अंदर है तो उसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप उसी जगह से रन करेगा, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में पहले हमें उस जगह जाना पड़ेगा जिस जगह ये जीएस फाइल मौजूद है। तो लेट मी से cd डॉट बैक स्लैश सी ड्राइव पे आ गए, हम सबसे निकल के बाहर आ गए, cd स्पेस ऑफिस नाम का फोल्डर है मेरे पास, इसके अंदर आ गए, राइट। cd स्पेस
फोल्डर का नाम क्या था जिसमें हम आपके सारे कोड को रख रहे थे? अच्छा, ऊपर लिखा क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम जैन, ठीक है, क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम जैन 2023, ठीक है, इसमें हम आ गए। अब इसके अंदर हमारी फाइल होनी चाहिए इनपुट कंसोल डेमो, ठीक है। सो अब मैं कहूंगा नोड, ठीक है, एन नहीं है, COS है, राइट। अच्छा, इनपुट है, पहले इनपुट है, इनपुट अंडर स्कोर नो, ये फाइल है, राइट। इसको रन कर रहे हैं, पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, मैंने अपना पूरा नाम कर दिया, ठीक है। तो उससे वही सेम प्रिंट कर दिया जो भी मैंने इंटर करा नाम। इंटर द फर्स्ट नंबर से 10, इंटर द सेकेंड नंबर से 5, व्हाट शुड बी द आउटपुट, पूरी स्ट्रिंग थी ना, द फर्स्ट नंबर इज 10, द सेकेंड नंबर इज 5, द सम इज 15, ऐसा आना चाहिए। द फर्स्ट नंबर इज 10, द सेकेंड नंबर इज 5 एंड देयर सम इज 105। ये कैसे हो गया? हाँ, अभी पीछे पीछे वाले एग्जाम्पल हमने देखा था कि आप अगर कोई चीज कंसोल पे या प्रॉम्प्ट पे इंटर कर रहे हैं तो एज अ टेक्स्ट इनपुट होगी, राइट। आप उसको पार्स करना पड़ेगा दोबारा से आपको, हमने यहाँ पे पार्स नहीं किया है, तो उससे क्या करा, कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। जब प्लस ऑपरेटर लगाएंगे दो स्ट्रिंग के ऊपर तो क्या करेगा, उसको कॉन्कैटिनेट करेगा ना, जोड़ देगा उसको, तो 10 + 5 उसे 105 कर दिया, राइट। तो क्या करना चाहिए कोड में बताओ गाइस, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कोड लगाए बताओ, लाइन नंबर बताओ। जहां प्रॉम्प्ट लिया उसके बाद 8 के बाद और 9 के बाद, दोनों एक साथ नीचे भी कर सकते हैं, फाइन। चलो हम बारी बारी कर देते हैं ताकि वही नजर आ जाए। तो फर्स्ट नम में दोबारा से असाइन करेंगे पास करके वैल्यू को, तो फर्स्ट नम इज इक्वल टू पार्स इंट यूज कर लेते हैं अब की बार, इंटीजर वैल्यूज है, इसमें क्या पास करें बताओ, फर्स्ट नम, सेम थिंग। सिमिलरली सेकेंड नम इज इक्वल टू पार्स इंट सेकेंड, फाइन, पार्सिंग हो गई। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आएगा, राइट। सो वी विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन and we will just run it again, just sha 10 5, then we are getting the answer 15, right। यही चीज आप टर्मिनल से आके करना चाहें, यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी फोल्डर के अंदर दिखा रहा है आपको, राइट। आप इसी कमांड को यहाँ पे दोबारा रन करेंगे, मतलब नोड स्पेस फाइल नेम डॉट जीएस, ठीक है, तो वो काम करेगा, ठीक है, फाइन। तो ये खैर बेसिक था इसका, शैल वी स्टॉप।